with reference to global environmental facility environment. It was established in 1992 as a financial mechanism to assist developing countries in meeting international environmental goals. It serves as financial mechanism for all major United Nations environmental conventions by agreements जहाँ भी है United Nations under the environmental agreements like Paris Agreement, like Rio Summit, Earth Summit, UNFCCC, etc. World Bank acts as trustee for GEF trust funds. पैसा पत्र जोगाड़ करे वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा वर्ष study found that although the global environmental facility plays a central role in achieving $200 billion annual biodiversity finance target, okay, under the target 19 of Kunming Montreal Global Biodiversity Framework, the environmental agreement by framework signed ହେଇଛି ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन ଅଛି डिस्कस କରିବା Kunming Montreal Global Biodiversity Framework, ओके, तार टार्गेट 19 अनुसार $200 बिलियन रो पैसा जोगाड़ करा जाइछि, ओके, एनुअल बायोडायवर्सिटी फाइनेंस भाग, ओके, से ये कहूँ कौन कि एते सारा पैसा जोगाड़ होते मध्य प्राय जो इंडिजिनस पीपल्स माने अछंती बा इंडिजिनस कहा कुआ जाय ट्राइबल पीपल्स किंबा लोकल कम्युनिटी माने जो माने फॉरेस्ट ड्वेलर्स से माननकु से जिंस मिली करू डायरेक्ट फंडिंग सपोर्ट से माननकु ठीक भली भाव में मिली करू पैसा जोगाड़ होची किंतु करप्शन होतु कि मिसयूज होतु। तो स्टेटमेंट 1 जोटा देथिला ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी 1992 रे एस्टैब्लिश हेतिला रियो अर्थ समिट से 1992 रे जोटी यूएनएफसीसीसी स्टार्ट हेतिला यूएनसीबीडी स्टार्ट हेतिला यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर डेजर्ट कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन आ गोटे यूएन जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ओके, यूएनसीसीडी यूएनसीबीडी, ओके, गोटे कॉम्बैट सीडी कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन गोटे होची सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ए तीनटा जिंस हम पढी ओल्ड एनवायरमेंटल क्लासेस एबे नुवा पुनी चली, ओके, तो से जाए पढ़ाए। तो रियो अर्थ समिट इट वाज क्रिएटेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज, ओके, एटा करा जाइथिला फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करिवो डेवलपिंग कंट्रीज माननको स्पेशली से मानकर एनवायरमेंटल कन्वेंशन जो से माने एग्रीमेंट्स करिसंती क्लाइमेट चेंज को नेकी कोटी से माने पेरिस एग्रीमेंट करिसंती कोटी से माने बायोडायवर्सिटी को नेकी डेजर्टिफिकेशन को रोकिबा को नेकी विभिन्न एग्रीमेंट्स करिसंती। तो सेही एग्रीमेंट्स अनुसार से मानकर निर्दिष्ट टारगेट्स अछि से टारगेट्स को फिल अप करिवा पय जो पैसा दरकार डेवलपिंग कंट्रीज मानको ये हेल्प करी, ओके, 1 टा करेक्ट अछि 2 टा जोटा देथिला नॉट करेक्ट, ओके, यस सेठी कहितिला कोन जे सब प्रकार यूएन एनवायरमेंटल कन्वेंशंस पे ये काम करे सब प्रकार पे काम करे, ओके, ये निर्दिष्ट किछि अछि जेमति यूएनएफसीसीसी अछि कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनसीबीडी अछि, ओके, तापर यूएनसीसीडी अछि ए सब गुडा को से गोटी हमर 1992 अर्थ समिट रियो अर्थ समिट रेटा सब माने नुवा प्रोग्राम गुडा को इनिशिएट हेतिला अंडर यूनाइटेड नेशन, ओके, ता सहित जो स्टॉकहोम कन्वेंशन विषय लास्ट डेटा क्लास रे डेटा क्वेश्चन करिछु, ओके, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ओके, तापर मिनिमाटा कन्वेंशन जोटा मर्क्यूरी ऊपर अछि मिनिमाटा डिजीज एटसेट्रा में पढिछु। तो एई जो पांचटा जिंस अछि यारी ऊपर ई पैसा गुडा को खर्च हो एटा टिके मन रखियो, ओके, 3टा करेक्ट अछि जे वर्ल्ड बैंक से पैसा जोगाड़ करिवा पय कोन करे से हेल्प कर,
ओके 1 करेक्ट अच्छी 3 करेक्ट अच्छी 2 टा रॉन्ग अच्छी ओके with reference to olive ridley sea turtles বা olive ridley turtles which of the following statements is or are correct they are herbivores primarily feed on seagrass the mass nesting phenomenon डरिगो द correct ଅଛି ओके ऑप्शन 2 टा बारंबार तुम पढिଛ सबुआडे सेटा करेक्ट अछि हरिबोध फेनोमेनन मास नेस्टिंग एकाथरे लक्ष लक्ष संख्या रे समान अंडा दियंती सी बीच मानकर आसिकी ओके ओडिसा र विभिन्न सी बीचेस मानकर अंडा दियंती लाइक ऋषिकुल्या मोहाण पढिछु ओके देवी मोहाण देवी नदी मोहाण गहिर मठा ए सब गुडा हरिबोध फेनोमेनन को ओके तो 2 टा तो करेक्ट अछि रहिला से माने हर्बिवोर्स ना से माने कार्निवोर्स ओके तांकर साइंटिफिक नेम ता दरकार नहीं सेटा छाड़ दियो ऑपरेशन ओलिविया लॉन्च हेतिला हेल्प प्रोटेक्ट ए रिकॉर्ड ऑफ ओवर 6.9 लाख ओलिव रिडली टर्टल्स नेस्टेड एट ऋषिकुल्या रिवर माउथ इन ओडिशा ओडिशा रो ऋषिकुल्या रिवर माउथ गंजाम रे ओके माने ऑपरेशन ओलिविया लॉन्च करा हितिला सेमान को प्रोटेक्ट करिवा पय जेमति तांकर मैक्सिमम अंडा जो छुआ बाहर जे से माने नॉर्मली छुआ मान को विपद कोथरे होय शिकारी माने थांती प्लस कार्निवोर ऑर्गेनिजम्स माने जंगल रु बाहर की तांको खाई जानती गुडाय जिंस पक्षी पक्षी गुडाय ओके ता सहित से माने जो ट्रॉलर्स फ्लोरर्स एक्सेट्रा जो छोट बड़ नौका सेतरे पेटी पाटी हेगी भी मरि जानती जाल छंदी हेगी मरि जानती प्लास्टिक पोल्यूशन गुडाय जिंस तो तांको प्रोटेक्ट करिया पे ऑपरेशन ओलिविया स्टार्ट हेतिला ओडिशा कोस्ट ऋषिकुल्या माउथ रे ओके 6.9 लाख ओलिव रिडली टर्टल्स माने हरिबोध फेनोमेनन करिसंती बा अंडा दैछ ओके बाकी सब हम आगरो पढिछु तो से सब गुडा को विषय रे बेसी किछि कहिबार आवश्यकता रे ट्रॉपिकल रीजन्स रो ओशन मानन करे देखा जानती अटलांटिक ओशन पैसिफिक ओशन आउ इंडियन ओशन ओके एटा तो कहली एबे ऋषिकुल्या गहिर मठा बीच ओके देवी नदी मोहान they are new unique mass एटा छाड़ दियो ले एक्स एटसेट्रा ओके एटा मन रखिबा को लिस्ट रे कोथरे जाउछन ओके आईयूसीएन लिस्ट रे वल्नरेबल रे अछंती माने संख्या कमुची साइट्स रे ओके शेड्यूल 1 रे अछंती जो जोटा साइट्स हम पढिछु ना जे एगुडा कोन करे एंडेंजर्ड स्पीशीज मानकर चोरा चालान को रोके ओके बा बिजनेस को रोके पढ़ाई छी अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 रो शेड्यूल 1 रे जाउछ ओके साइट्स रो अपेंडिक्स 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट रो शेड्यूल 1 आउ आईयूसीएन रो बोला इ सबुतरे तीनटा थाए तो स्पेसिफिकली हमें ये ओलिव रिडली सी टर्टल्स टाइगर्स लायन ओके एगोला किछि इंपोर्टेंट 3 4 5 टा जीव पय हम मन रखु सबुडा बाकी सब तो दरकार नहीं क्रोकोडाइल ओके बोथ आर करेक्ट दे आर हर्बिवोर्स with reference to Asiatic lion consider Asiatic lions are slightly smaller than African lions एबे हमर सेंसस हेतिला तो या ऊपर क्वेश्चन आसीबर चांसेस अछि ओके enlisted in endangered as endangered in IUCN red list threatened species endangered रे मानकर ना अछि 2012-22 मते तो मन पडुनी सेमती कोन पडुतले वाइल्ड लाइफ एक्ट तो सेंसस हेतिला तो तांकर रिलेटेड गुडाई जिंस तुमको किछि पढिबार अछि एज पर 16th एथरा केते नंबर पॉपुलेशन एस्टिमेशन करा जायछि 16 लायन पॉपुलेशन एस्टिमेशन 16 नंबर थरा करा है ओके इंडिया हैज रिपोर्टेड 32% एंगेज सब गुडा को स्टेटमेंट रे पचारि करी ला 20 25
खाने माने 20 रु 25 5 वर्ष भितर 32% इंक्रीज बा राइज देखा जायछि लायन पॉपुलेशन इंडिया। ओके टोटल पॉपुलेशन जोटा एबे केते अछि 891 अछि 2025 रे 891 अछि टिके टिके ओवरऑल देखि दैथि। ओके हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन रे जो परसेंटेज एटसेट्रा देछि बिल्कुल दरकार नै आमे केवल मन रखिबा जे भारत रे जो मेन 5 प्रकार बिग कैट्स देखा जानती लायन टाइगर एटसेट्रा ओके सेमान को भितर माने गोटी 5 प्रकार भारत रे देखा जानती बिग कैट्स टाइगर लायन लेपर्ड एटसेट्रा। तो नॉर्मली माने भारत रे कोटी कोटी देखा जाती भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओके जहाँ को एबे सेकंड होम ऑफ एशियाटिक लायंस बोली कुआ जाउची गिर नेशनल पार्क रु सेठी की ट्रांसफर करा जाइछि। ओके ता सहित आखरे पाखरे गिर नेशनल पार्क पनिया मिथिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तारी पाखरे पाखरे अछि। ओके ए सब रीजन से गुजरात रे स्पेसिफिकली माने देखा जाती आ गोटे चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश बिंदियस। ओके कंजर्वेशन स्टेटस मन रखिबा आईयूसीएन रे एंडेंजर्ड साइट्स रे अपेंडिक्स 1 आ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन रे शेड्यूल 1 एटा प्राय समस्त को जहां हमें इंपोर्टेंट एनिमल्स पढू टाइगर लायन ओके समस्त एटा कोन सेम थाए साइट्स रे अपेंडिक्स 1 रे थांती आ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट रे शेड्यूल 1 रे खाली डिफरेंस हुए जो आईयूसीएन रेड लिस्ट का कोटा वल्नरेबल थाए कोटा एंडेंजर्ड कोटा क्रिटिकली एंडेंजर्ड सेटा टिके फोकस करबार अछि। ओके तो लायंस नॉर्मली बेसिकली दुई प्रकार ही हम पृथ्वी रे अछंती गोटे हला एशियाटिक लायंस गुडा को आ गोटे होजंती अफ्रीकन लायंस गुडा जोटा कि एशियन लायंस गुडा को टिके छोटिया। ओके एंडेंजर्ड बोथ करेक्ट अछि। आगुरु चारटा शेड्यूल थिला चारटा शेड्यूल थिला ताकू दीटा शेड्यूल करा हिचियो एटा हमें ओल्ड एनवायरनमेंट क्लास रे पढु वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ईयर तो मोर मन में केबे कराइथिला 12/22 किंतु सेटा में पढिथिले जे चारटा थिला आगुरु शेड्यूल एबे दीटा अछि with reference to International Day for Biological Diversity. It commemorates the adoption of Convention on Biological Diversity 1992 Rio Summit. Theme होची Harmony with Nature Sustainable Development. International Day for Biological Diversity टा से टू CBD जब एस्टैब्लिश हेतिला 1992 रे ओके से दिन को मने पके कि एटा करा जाय कि वन टा बाकी टू टा होची थीम टा। ओके तो नॉर्मली केबे पालन करा जाय एवरी ईयर 22 मई रे पालन करा जाय। ओके आईबीडी कमेमोरेट्स दिस से जो जिनसटा देथिला 1992 रे ओके अवेयरनेस अमंग सेटे होटा दरकार ने हार्मोनी विथ नेचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेक्ट अछि। With reference to National Center for Polar and Ocean Research MCPOR, it operates under Ministry of Environment, Forest, Climate Change. Okay, एटा Ministry of Earth Sciences under रे जाउथु। Okay, National Center for Polar and Ocean Research. Okay, research wing टा एटा मतलब बेसिकली मो हिसाब रे एटा Earth Sciences under रे जाउथु। देखियो responsible for administering India's Antarctic program. यार मेन कामटा होची जे भारत जो बारंबार अंटार्कटिका जाए और अंटार्कटिका रे रिसर्च स्टेशंस गुडा को भी करिछ तो सेही प्रोग्राम को ये कोन मॉनिटर करे बा एडमिनिस्टर करे। ओके भारत रो जेंती दुईटा मैत्री भारती ओके स्टेशंस गुडा को रिसर्च स्टेशन ताकू मेंटेन करे आ गोटे दक्षिण गंगोत्री सेटा एबे मैत्री भारती दक्षिण गंगोत्री से भितर गोटे कोन हमरो 1983 1990 और 2013 ना 15 गोटे भारती तीनटा रिसर्च स्टेशन से भितर गोटे फास्ट जोटा थिला सेटा एबे स्टोर हाउस बळे काम करूछ एक्टिव दीटा अछि मैत्री भारत। ओके जितेंद्र सिंह इनागुरेट सागर भवन पोलार भवन एट द नेशनल सेंटर दिस इज गोवा एटा कोडी अछि गोवा रे अछि
नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च एटा गोवा रे अछि सेठी सागर भवन पोलर भवन बोली दीटा माने इनागोरेशन हेछि ओके सेटा दरकार नै टॉपिक टा को आसो जे नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च 1998 रे एस्टैब्लिश हेतिला होतली ना मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस अंडर रे जाउछ ओके साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ऊपर एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग ऊपर आर्कटिक एंटार्क्टिक किंबा सदर्न ओशन आड़ को जो हमरो एक्सपेडिशंस गुड़ा को जाउछ साइंटिफिक एक्सपेडिशंस ता ऊपर फोकस करे मॉनिटर करे ओके वन टा नोट करे टू टा जोटा सेटा करेक्ट अछि वन रे ही हमें कहि देले टू टा करेक्ट अछि बोली वन भूल अछि टू करेक्ट अछि हां एटा जोटा हम कहथि जो एबे ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी रे डिस्कस करथिले convening Montreal Global Biodiversity Framework was adopted at international conference. Co international conference रे convening Montreal Global Biodiversity Framework by agreement का protocol ता साइन हेतिला by initiate हेतिला UN Water Conference 2023 COP28 ओके यूएनसीसीडी रो सीओपी देखो यूएनसीबीडी रो भी सीओपी हो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यूएनसीसीडी रो भी हो एनसीसीसी रो भी यूएनएफसीसीसी रो भी ओके बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क तो ऑब्वियसली एटा सीओपी 15 जोटा हमर कन्वेंशन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी हितबो से बायोडायवर्सिटी कथा आसीबो से कन्विंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ग्लोबल डायवर्सिटी फ्रेमवर्क वाज कंक्लूडेड इन सीओपी 15 माने 15 नंबर जोटा 2022 रे हितला मॉन्ट्रियल कनाडा तार सीबीडी अंडर यूएन सीबीडी अंडर ओके माने जोटा की बायोडायवर्सिटी प्रॉब्लम्स जोड़ा को मिटिगेट करया पे चेष्टा करूछ ओके इट फीचर्स 23 टारगेट्स टू बी मेट बाय 2030 जहा हेले तो 30 टारगेट रखी दोचंती हो ओके 23 टा टारगेट निया है 30 जाय ताको माने रखा है जेमती हमर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रो टारगेट 2030 अछि बहुत बड़ा जिनिस और चारटा ग्लोबल गोल्स भी से माने नै छथि जहा को 2050 टारगेट रखि छथि ओके एटा उटे बाइंडिंग एग्रीमेंट नो माने एथि केवल लोक साइन करछथि रेटिफाई करबा दरकार रेटिफाई करले बाइंडिंग एग्रीमेंट with reference to Paris Agreement under United Nations Framework Convention माने UNFCCC global the goal of limiting global warming to 1.5 degree centigrade above pre-industrial level a legally binding obligation under the agreement. Paris Agreement requires countries to submit and update their national CCC CBD legally binding किंतु जो कन्विंग मॉन्ट्रियल जो फ्रेमवर्क टा सेटा लीगली बाइंडिंग तारी अंडर रे जोटा फ्रेमवर्क है हां नेशनली डिटरमाइन कंट्रीब्यूशंस ओके प्रत्येक 5 वर्ष रे थरे सब कंट्री माने निजर नेशनली डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन को अपडेट करंती नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन भारत रा पांचटा अछि पंचमित्र स्कीम एटसेट्रा पढी छु हम ऑलरेडी पंचामृत स्कीम सॉरी a permanent breach of 1.5 degree centigrade limit refers to a single year of warming above the threshold माने जो 1.5 डिग्री जो निया हेछि ता गोटे वर्ष पय निया हेछि पढी छु 1.5 डिग्री 2 डिग्री वाइज पेरिस एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो यूएस कोन करछि निजो को हटै दै छि ओके बा यूएस छाडी दै छि ये जो पेरिस एग्रीमेंट डोनाल्ड ट्रम्प 2015 रे सीओपी 21 रे एटा स्टार्ट हेतिला हम आगरो पढी छु aims to limit global warming by to below 2 degree centigrade celsius above pre-industrial level pre-industrial level थारु 2 डिग्री कम रखिबा ओके प्री इंडस्ट्रियल लेवल जेति की तापमात्रा थिला ताठो 2 डिग्री कम रखि ओके with efforts to limit the increase to 1.5 डिग्री माने 2 डिग्री
मैक्सिमम 2 डिग्री माने प्री इंडस्ट्रियल लेवल बारंबार मु बुझे प्री इंडस्ट्रियल लेवल जदि 15 थिला प्री इंडस्ट्रियल माने कौन यूरोप रे जेतले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हला 1950s रे सॉरी 1750s रे सेते बेले जदि तापमात्राटा पृथ्वीर एवरेज टेम्परेचर 15 थिला तो ताकू मैक्सिमम केते जाए 17 डिग्री जाए रोका जिवो ताठू बेसी हेबाकू देजिवो ना आ चेष्टा करा जिवो जे ताकू 16.5 भीतर रखा जदि 15 थिला तो जहाँ भी थिला 15 आमे नेले अडा जे से जो पेरिस एग्रीमेंट रो एम चेष्टा करा जिवो 16.5 भीतर रखियो 1.5 डिग्री मैक्सिमम ओके प्री इंडस्ट्रियल लेवल ठाରୁ 1.5 डिग्री और मैक्सिमम ते चेष्टा करा दियो किंतु तारा टारगेट होची 2 डिग्री जाए मैक्सिमम ताठू बेसी हेबाकू दिया जीवो ना ओके 1.5 डिग्री लिमिट ग्लोबल इज नॉट ए लीगल बाउंड्री ओके एटा लीगली माने बाइंडिंग नुह जे 1 पॉइंट माने चेष्टा करा जीवो एफर्ट्स करा जीवो दो माने लीगली बाइंडिंग ओके तो से जो स्टेटमेंट 1 टा देथिला लीगल ऑब्लिगेशन बोली सेटा ठीक नहीं and statement 1 is not correct a permanent breach implies long term warming okay 20 to 30 years not a single year गोटे वर्ष पई नुह ना एटा क्लाइमेट कथा कहआ जाय क्लाइमेट कथा जेतले कहआ जाय क्लाइमेट ता कोन पाखा पाखी 25 30 35 वर्ष र थ्रेशोल्ड लिया जाय पढी छु ना तो डब्ल्यू कोपेन क्लासिफिकेशन वर्ल्ड क्लाइमेट रे पढा गोटे क्लाइमेट माने कोन 20 30 35 वर्ष जाय लिया जाय थ्रेशोल्ड गोटे वर्ष र लिया जाय ओके टूटा करेक्ट अछि आई थिंक टूटा करेक्ट अछि 5 वर्ष जो टिकट है सेटा टिके देखियो पेरिस एग्रीमेंट एम्फसाइजेस नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन माने कोन प्रत्येक कंट्री निज निज आडू किछि चेष्टा करिवे ओके encourages all countries to take climate action countries must review update their NDCs in every 5 years ओके माने एबे कोन 2030 हमर जो नेक्स्ट जो 30th कॉन्फ्रेंस हो सीओपी 29 टा एबे सरिला ना यूएनएफसीसीसी जोटा बाकू अजरबैजान रे हितिला तो ओके तापरे सीओपी 30 टा हो ठीक तो सीओपी जो 30 टा हो सीओपी 30 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जोटा हो सीओपी 30 टा सेटा कोठी 24 रे जोटा हितिला सेटा बाकू रे हितिला अजरबैजान रे नेक्स्ट ब्राजिल रे हो ना नवंबर मास रे 2025 ब्राजिल रे हो बेलेम बीएलएम बेलेम ब्राजिल रे हो नेक्स्ट एटा जोटा हो बेलेम ब्राजिल रे हो माने सेठी कोन हो सेठी पुनी टारगेट रखा दिबो ओके सीओपी 30 माने नेक्स्ट अपडेट आसीबो त ओके माने गुडा देश एमिति अछंती जो माने फॉरवर्ड अछंती 2031 रु 35 जाय तांकर कोन एनडीसीस रहइबो से माने देई सारला किंतु गुडा माने 15 टा गंडे कंट्री 180 कंट्री जेमति अछंती जो माने देई ना तो से माने देबे आ क्वेश्चन कहितिला नॉट करेक्ट तो 1 3 आंसर हबो biostimulants they are substances or microorganisms that directly provide essential nutrients to plants similar to traditional fertilizers seaweeds extract humic acids are examples of biostimulants they were incorporated as distinct category of fertilizers under fertilizers control order 2021 in 2020 biostimulants विषय रे क्वेश्चन पता एटा भी एनवायरनमेंट साइंस रिलेटेड ओके biostimulants do not directly provide nutrients like traditional fertilizers माने हमें जो नॉर्मली एनपीके फर्टिलाइजर्स यूज करू नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस फर्टिलाइजर्स जो यूज करू ओके तो से जो फर्टिलाइजर्स गुडा डायरेक्टली कोन करे प्लांट को न्यूजर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर किंतु बायोस्टिमुलेंट्स गुडा डायरेक्टली प्रोवाइड करे नहीं फर्टिलाइजर्स भलिया माने माने कोन करंती माने न्यूट्रिएंट्स जहा अछि ताकू माने अपटेक करवाटा इजी करंती बा बेटर करंती
बेटर रूट डेवलपमेंट करिवे, रूट टा भलो भाबरे डेवलप हबो। ओके, न्यूट्रिएंट अपटेक बढ़िबो, बेसी न्यूट्रिएंट नै परिवे प्लांट रूट गुडा को। आउ वाटर स्ट्रेस कंडीशन रे भी से माने कोन बंची रहबे कम पानी रे, से जिंस बायोस्टिमुलेंट कर। ओके, तो वन टा नॉट करेक्ट अछि। Seaweed extract and humic acids are widely used as biostimulants known improving soil health and plant growth. Okay, soil health को भी better करे, plant growth को भी बढ़ाए। और इधर normally कौन है humic acids बोले उड़ा acid use हुए plus seaweeds उड़ा को use करा। Okay, बा समुद्री घास। स्टेटमेंट 3 जोटा अछि बायोस्टिमुलेंट्स वर ऑफिशियली इनकॉर्पोरेटेड अंडर फर्टिलाइजर कंट्रोल जोटा 2021 रे ठीक अछि। 2 3 करेक्ट अच्छी, 1 टा रॉन्ग अच्छी। पॉलिटी खाली ज्योग्राफी एनवायरनमेंट करथिले सैटरडे दिन, एबे एनवायरनमेंट सरला, पॉलिटी को जीवा, तापर इकोनॉमिक्स, देन हिस्ट्री with reference to caste enumeration in census exercise in India. It falls under concurrent list under 7th schedule of the Indian Constitution. माने स्टेट और सेंटर बोथ रो पावर अछि। Last caste based enumeration of India's population was conducted, माने caste based census enumeration माने caste based census 1931 रे हेतिला। Okay, recently cabinet committee on political affairs, okay, cabinet committee on political affairs जहार माने चेयरमैन होजंती प्राइम मिनिस्टर निजे, has decided to include caste enumeration in upcoming census exercise. तो आगो को सेंसस हबो बोली हमें कहूछु 2026 36 जो माने आगो को तो सेथिरे कोन करा दिबो, कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स कहिछि जे कास्ट एनुमरेशन करा दिबो। ओके, स्टेटमेंट 1 टा जोटा देछि आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेंसस इज ए यूनियन सब्जेक्ट। ओके, इट इज नॉट इन कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट रे अछि। ओके, माने एटा संपूर्ण भावे पार्लियामेंट हाथ रे अछि तार डिसीजंस। Last caste based enumeration of India's population was conducted in 1931. During British rule, it counted the total number of castes for the मन रखियो दरकार। 1931 में ब्रिटिश जमाना रे हेतिला शेष कास्ट बेस्ड इनोवेशन माने भारत सारा। ओके, किंतु वर्ल्ड वार 2 जो कोन हेतिला से सब जिंस पब्लिश हेई पारि नथिला। एटा यूनियन लिस्ट रे जीवो, एटा करेक्ट अछि। Supreme Court's judgment in case of common cause versus Union of India, एटा कहाँ सहित रिलेटेड? कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 केस रे सुप्रीम कोर्ट जो रूलिंग देथिला बा जजमेंट देथिला, को जिंस सहित रिलेटेड? राइट टू डाई विथ डिग्निटी, disqualification of legislatures, reservation and promotion for SC STs, decriminalization of homosexuality. यूथेनेसिया, okay, ड्यू राइट टू डाई विथ डिग्निटी एगुड़ा का हमें पढ़ी थिले। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर भी पढ़ी छु हमें 10th शेड्यूल, तापर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल ऑफ 1951 पढ़ी छु ना। रिसेंटली 2-4-5 क्वेश्चन या ऊपर करा है। आंसर कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट एम्फसाइज दैट द डिजिटल एसेस इज ए क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 विषय कहूँ।
Okay, no person shall be deprived of his life or personal liberty, এটা ଆମେ ଜାଣିଛୁ। आर्टिकल 21 कथा पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट रे जाउची। राइट गारंटीज टू ऑल पर्सन सिटीजन हुंतु किबा नॉट सिटीजन हुंतु समस्त को आर्टिकल 21 रा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी प्रोवाइड करे। It places restriction on the state from arbitrarily interfering with the persons of life liberty. Over time courts have interpreted many judgments ସେଥିରେ କରାଯାଇଛି। ओके जमती एठी तळे गुडाय माने जजमेंट्स से आर्टिकल 21 को नै जुडिशियल इंटरप्रिटेशन गुडा को देछि। राइट टू लाइवलीहुड ऊपर हेतिला कोन ओल्गा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985 केस। राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट ओके सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 हला एथिरे मु भी केस कर देबी गोटे भाबु ओडिसा गवर्नमेंट ऊपर। राइट टू एजुकेशन प्रायर टू आर्टिकल 21 मोहिनी जैन वर्सेस द स्टेट ऑफ कर्नाटका। राइट टू प्राइवेसी टा हो कोन जस्टिस केस उठा स्वामी एटा टिके पढितिला आगु 2017। राइट टू डाई विथ पर्सनल डाई विथ डिग्निटी कॉमन कॉज वर्सेस द यूनियन ऑफ एटा से यूथेनेसिया केस सहित रिलेटेड पढिछु ना यूथेनेसिया। आम घर आखपाख जो टाइप रो अवस्था हेची मु भावुची सेटा गोटे कर देबी। जो आम पढ़ुला डेलिबरेटली निजर लाइफ को एंड कर दबा यूथेनेसिया। Which of the following is mandatorily required to be submitted while applying for voter registration using form 6? एटा पहलगाम अटैक पर एटा न्यूज रे आसला ए जो जिंस। Which of the following is mandatorily required माने मैंडेटरी माने कोन बाध्यतामूलक टू बी सबमिटेड जेतला वोटर रजिस्ट्रेशन पे तुमे वोटर आईडी वोटर रजिस्ट्रेशन पे तुमे अप्लाई करूछ फॉर्म 6 को यूज करिकी तुमे ए भीतर कोटा मैंडेटरीली सबमिट करबा दरकार। ए सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, notarized copy of birth certificate, okay, a self-attested document as proof of age and address, a copy of applicant's passport and PAN card. लास्ट दीटा तो टिके भल लागुनी ऑप्शन गुडा को भल लागुली सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट एज प्रूफ ऑफ एज एंड एड्रेस, अ कॉपी ऑफ एप्लीकेंट्स पासपोर्ट पैन कार्ड। देखियो पहलगाम टेरर अटैक पर several deported Pakistani nationals were found to possess Indian identity documents like Aadhaar, ration card, even voter IDs. Okay, गुडाए पाकिस्तानी जो माने इमिग्रेंट भाव रे पळे आछंती जोर जबरदस्ती बेआईन भाव रे इलीगल माइग्रेंट्स पड़ी जना तांको सिटीजनशिप दिया जाई परिबोनी। इलीगल माइग्रेंट्स मान को कोनोसी भाव रे भी सिटीजनशिप दिया जाई परिबोनी बोली हमें सिटीजनशिप रो प्रत्येक प्रोविजन रे पढिछु। बाय बर्थ, डिसेंट, नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी कोनोसी थ्री इलीगल माइग्रेंट्स मान को दिया जाई परिबोना सिटीजनशिप पढिछु। ओके कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फ्रेमवर्क कोन अछि यार अगेंस्ट आर्टिकल 326 of constitution states that every Indian citizen aged 18 years or above has the right to vote in election to Lok Sabha, state, union territories assemblies। 18 वर्ष रो बेसी वोट देई परिबे लोक सभा और स्टेट असेंबली यूनियन टेरिटरीज असेंबलीज मान को अपन। सेक्शन 16 of the representation of people act गेडा हला कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस रे आर्टिकल 326 तापरे निर्दिष्ट पार्लियामेंट्री एक्ट बेसिस रे जदी कहबा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 section 16 disqualifies a person from being registered on an electoral roll if they are not a citizen of India। माने इलेक्टोरल रोल रे इलेक्टोरल लिस्ट रे तांकर ना आसीबो नै जदी सिटीजन नोहंती बा डॉक्यूमेंट नै सिटीजन नोहंती are of unsound mind पगला हेती declared by competent court
ओके निर्दिष्ट गोटे कॉम्पिटेंट कोर्ट के गोटे तो माने ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन अनसाउंड बोली घोषणा करिछि किंबा नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया are disqualified under any law relating to corrupt practices offenses in connection with the elections okay elections etc जदि कोनोसी प्रकार एमिति काम करिसंती जोटा अलाउड नहीं बा करप्शन करिसंती ताहले तांको भी डिस्क्वालिफाई करा दे पारे को मान इलेक्टोरल रोल रो एठी हमें इलेक्शन लड़ीबा कथा कोना ओके प्रोसीजर फॉर वोटर रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया मैंडेट्स न्यू वोटर्स टू अप्लाई यूजिंग फॉर्म 6 जो माने नुआ वोटर्स हेतिबे से माने रजिस्ट्रेशन करि परिबे निजर वोटर आईडी बनै परिबे रजिस्ट्रेशन वोटर इलेक्टोरल रोल रे करि परिबे तापे फॉर्म 6 अछि ओके तापे कोन होची सेल्फ अटेस्टेड प्रूफ ऑफ एज एंड एड्रेस ओके अछि सेटा ओके माने सेल्फ अटेस्टेड माने प्रूफ ऑफ एज प्लस एड्रेस कहै माने इलेक्ट्रिक बिल पासपोर्ट एटसेट्रा ओके a declaration of Indian citizen which they must personally design a declaration of Indian citizen which they must personally sign डिजाइन कर साइन करते जे मु गोटे भारतीय नागरिक ता सहित कोन प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप मतलब सिटीजनशिप रो सबटु कॉमन प्रूफ हमर कोन अछि बर्थ सर्टिफिकेट ओके किंबा पासपोर्ट ओके नॉट स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड अनलेस ओके ईआरओ सस्पेक्ट द एप्लीकेंट्स जो इलेक्शन ऑफिसर्स अच्छी से माने जदि सस्पेक्ट न कले ताहले तो मागिबे नहीं बर्थ सर्टिफिकेट पासपोर्ट माने नॉर्मली तुम्हें सेल्फ अटेस्टेड जो तुमर एड्रेस प्रूफ इलेक्ट्रिसिटी बिल एटसेट्रा सहित तुमर दे देलो फोटो जहाँ भी दे देलो माने चली जीवो ओके प्लस गोटे डिक्लेरेशन जे मु गोटे भारतीय नागरिक मो पाखरे प्रूफ अछि जदि डाउट हेबो ईआरओ को इलेक्शन ऑफिसर को डाउट है ताहले तुमको से मागी भी परिबो एट द स्पॉट कौन मागी परिबो पासपोर्ट मागी परिबो बर्थ सर्टिफिकेट मागी परिबो एडे देखिथिबो एबेटा सब करंट माने सब जिंस गुडा को ना इमिग्रेशन पहलगाम अटैक ओके एडा सब बोले न्यूज रे अछि एटा सॉरी सीटा Article 262 of the Indian Constitution is related to which of the following? President rule सहित related financial emergency. President rule तो not 256. Okay, 265 पड़े. Financial emergency 260. ठीक तो? और national emergency 252. Interstate river disputes local self government भी नुआ. ताले सीटा odd man out करी परिबो इथरो. ऑडमैन आउट है प्रेसिडेंट रूल फाइनेंशियल इमरजेंसी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एथुर तुम बाहर करि परिबो ए क्वेश्चन टा इजी हो अन्य तीनटा ऑप्शन को देखिले ओके और रिवर डिस्प्यूट ऊपर प्रीवियस क्लासेस मान कर हम डिस्कस करिछु आर्टिकल 262 इंडियन को एम्पावर्स पार्लियामेंट लेजिस्लेट फॉर एजुकेशन ऑफ इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट तांको पई पार्लियामेंट कोन करि परिबो निर्दिष्ट ट्रिब्यूनल भी गठन करि परिबो पढिछु रिसेंटली रिवर बोर्ड एक्ट 1956 इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 लास्ट क्लास रे बेमते गुटे क्वेश्चन थिला आ बेसे डिस्कस करिवा आवश्यकता नै कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इंडिया इज सिग्नेटरी टू 1951 यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन इंडिया डजंट हैव एनी नेशनल रेफ्यूजी पॉलिसी और रेफ्यूजी लॉ रेफ्यूजी नॉर्मली काहा को कुआ जाय इलीगल माइग्रेंट्स मानु को ही रेफ्यूजी बोलु ओके एमिति लोक माने जो माने निज रीजन्स रे जेहेतु तांकर असुविधा होची रहिबा पे असुविधा काई हबो पॉलिटिकल टर्बुलेंस अछि मिलिटरी टर्बुलेंस अछि युद्ध होची ओके एम्प्लॉयमेंट किछि नाही एग्रीकल्चर किछि नाही डेजर्ट एरिया टा ओके तो ई भला विभिन्न परिस्थिति जोटा कि तांको कोन पुश करूछि निज रीजन अन्य रीजन को जोटी सेगुडा को मिली करी
ओके पुश फैक्टर पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन पढ़ी ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी ऑप्शन 1 टा कोन जे इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी ऑफ 1951 यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन ओके 1951 रे यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन तार के निर्दिष्ट एग्रीमेंट्स निर्दिष्ट गाइडलाइंस अछि रेफ्यूजीज मानको सहित केमति डील करा दिबो कोन ओके 19 और 1967 प्रोटोकॉल रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजी माने रेफ्यूजी मानकु नै कि इंटरनेशनल दीटा एग्रीमेंट अछि 1951 रो यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन अछि ता सहित 1967 प्रोटोकॉल अछि ओके बोथ रे इंडिया साइन करी नै नै करी परिबो नै इंडिया बिकॉज़ इंडिया चारि आडे जो माने अछंती चाइना अछि बांग्लादेश अछि एपटे कोन अछि हमर जो पाकिस्तान अछि और एमानकु हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप देवा पाई भी मध्य कोन होछि दुई थर भाबुछि पढि छु ना नै विभिन्न वे ओके माने बहुत कम प्रोविजंस अछि जो थरे कोन हमें पाकिस्तानी किबा बांग्लादेशी लोक मानकु सिटीजनशिप दोछ देयर आर strict rules and regulations so in that aspect india कोन refugee convention रे साइन करी नै statement 2 is correct india doesn't have any national refugee policy also okay इंडिया रो निजरो नेशनल पॉलिसी ऑन रेफ्यूजी किछि नै ओके माने जहां भी फॉरेन अनडॉक्यूमेंटेड बाय इलीगल माइग्रेंट्स उडा को अछन फॉरेन नेशनल्स ओके as per the provisions of the foreign foreigners act 1946 माने एटा प्री इंडिपेंडेंस एक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 एटा भी प्री इंडिपेंडेंस पासपोर्ट एक्ट 1920 ओके एंड सिटीजनशिप एक्ट 1950 गोटे केवल अछि जोटा कोन होछि आफ्टर इंडिपेंडेंस बाकी सब बिफोर इंडिपेंडेंस एही सब एक्ट रे जहां रूल्स रेगुलेशन अछि ता अनुसार रेफ्यूजी मानक सहित डील करा जाय निर्दिष्ट रेफ्यूजी पाई किछि पॉलिसी भारत रे नै ओके वन टा नॉट करेक्ट ओके टू टा करेक्ट लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बे पढिथिले तीन चार थर पढिले नै एटा लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया judgment 2013 Supreme Court India directly addresses the issues of disqualification of lawmakers upon conviction last class रे भी डिस्कस करिथिले डिटेल से ता पूर्व गोटे दिटा क्लास रे भी करथिले लिली थॉमस वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट सुप्रीम कोर्ट एक केस रे जो जजमेंट देथिला कहथिला ना से जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को नै की तार प्रावधान तार प्रोविजन को लेके कहथिला एंड मैंडेटेड दैट द इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लॉ मेकर अपॉन कन्विक्शन ऑफ 2 इयर्स और मोर इन स्पेसिफाइड ऑफेंसेस राहुल गांधी केस पढ़ी सर अब बेसी चर्चा करके टाइम लॉस करिवले पूर्व क्लास मना करे कराई कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल डिफेंस फंड एनडीएफ नेशनल डिफेंस फंड ऊपर देछि contribution made to the national defense fund are eligible for tax exemption under the section 80g of the income tax act okay it is more like economics or politics contribution made to ndf national defense fund are eligible to tax exemption माने नेशनल डिफेंस फंड रे जो पैसा उडा का आसुची सेतरे टैक्स लागू नै इनकम टैक्स एक्ट अनुसार National Defence Fund receives annual budgetary allocations from Government of India. माने गवर्नमेंट निजर budgetary allocations रे एथिरे पैसा दी डिफेंस को तो बहुत पैसा दिया जाउची ना एबे ई वर्ष बोधे डिफेंस को भी मैक्सिमम पैसा दिया जाइथिला जेते ग्रांट ऑफ एड थिला सब थिले अब तो बेसी डिफेंस सेक्टर को दिया जाइथिला ना बजट 2025-26 रे किंतु नेशनल डिफेंस फंड को दौछि सेटा हमको देखियो नेशनल डिफेंस फंड ता एस्टैब्लिश हेतिला 1962 रे माने इंडो चाइना वार 1962 माने इंडो चाइना वार ना ओके
to utilize voluntary donations for welfare and armed forces personnel and their families. ओके माने जो डोनेशंस गुड़ा का आसुची लोक माने जो डोनेट करूछंती वॉलंटरी डोनेशंस जेतेले वार एटसेट्रा हुए भारत सारा रो डोनेशंस गुड़ा का जाए एलओसी समय रे भी मु देखिथिली एलओसी वार समय ओके तो 1999 से समय रे भी बहुत गुड़ा डोनेशंस दिया हेतला तो से सब डोनेशंस गुड़ा का नॉर्मली एठी के जाए विभिन्न तरफ भारत जोटा कि वेलफेयर कहा पई बेटा माने नियोजित करा जाए पैसाटा आर्मी पर्सनल्स और तांकर फैमिलीज मान को The fund is managed by executive committee with prime minister as the chairperson. Okay, fund रो मैनेजमेंट में गोटे एग्जीक्यूटिव कमिटी अछि जहार चेयरपर्सन निजे प्राइम मिनिस्टर अछंती अन्य मेंबर्स माने डिफेंस मिनिस्टर होम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर ओके फंडिंग एनडीएफ रिलायज एंटायरली ऑन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पब्लिक रिसीव्स नो बजेटरी सपोर्ट गवर्नमेंट तरफ रो कोनसे बजेटरी सपोर्ट मिले ने पब्लिक डोनेशन सुविधा चले ओके जेहेतु एटा डोनेशन टा तो डोनेशन रे कोन टैक्स नॉर्मली तो लागे नहीं ओके माने चैरिटी टा डोनेशन टा तो वन टा करेक्ट अछि टैक्स एग्जेम्पशन हबो जो टू टा भूल अछि वन ओनली legal framework outlines the procedure for removal सेक्शन टा ठीक देतिला तो सेक्शन रे किछि भूल देतिला कि सेक्शन एट इज करेक्ट करछ सेते और डिटेल थिले आ कोन करि करबे हबोनी सेटा following legal frameworks outlines the procedure for removal of supreme court judge सुप्रीम कोर्ट जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एटा कोड आसी न्यूज़ टा एटा होचे जो हमर नुआ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त हेले बीआर गवाई सेटू ओके एटा कोडी अछि जजेस इंक्वायरी 1968 पढ़ाई जी एटा जस्टिस भूषण रामकृष्ण बीआर गवाई sworn in as the new chief justice of India by 52nd by द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ओके रिमूवल कथा जदि हमें कहिबा जोटा हम क्वेश्चन रे पचारि जेटा हमें पढिछु सब एटा माने रिमूवल विषय रे जजेस इंक्वायरी 1968 आधार रे एटा चले ओके सेठी जहा लेखा है जेमति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर इम्पीचमेंट प्रोसेस ओके जे इम्पीचमेंट प्रोसेस टा राज्यसभा रे भी इनिशिएट हे परिबो लोकसभा रे भी इनिशिएट हे परिबो जदि राज्यसभा रे इनिशिएट हेबो ओके ताहले गोटे नोटिस देबो राज्यसभा 50 जन मेंबर सेतरे साइन करथिबे लोकसभा भी जदि हेबो लोकसभा रे नोटिस जोटा देबो लोकसभा सेतरे 100 जन मेंबर तार एमपी साइन करथिबे ओके राज्यसभा हेले चेयरमैन को देबो लोकसभा हेले स्पीकर को देबो ओके एबे स्पीकर और चेयरमैन कर भी सेटा अछि जे कोन से माने एक्सेप्ट करि परिबे किबा रिफ्यूज करि परिबे जदि एक्सेप्ट कले तो मोशन एक्सेप्टेड हे गला इम्पीचमेंट मोशन जदि रिफ्यूज कले तो इम्पीचमेंट मेंशन कैंसिल हे गला ओके जदि एक्सेप्टेड हला तापरे गुडे तीन जणिया मेंबर कमिटी करा जो से तीन जणिया मेंबर कमिटी रे के रहबे सुप्रीम कोर्ट जज जणे रहबे ओके हाई कोर्ट जज हाई कोर्ट रो जणे चीफ जस्टिस रहबे आ निर्दिष्ट गोटे फेमस जूरिस्ट भारत रो के उठर इमिनेंट जूरिस्ट तीन जण रह सुप्रीम कोर्ट जज जणे हाई कोर्ट रो चीफ जस्टिस जणे आ गोटे एमिनेंट जूरिस्ट रिटायर्ड भी हेते करन आ तापरे से सुनिबो कोन कोन चार्जेस अछि तांको ऊपर से कमिटी टा माने से गोटे इन्वेस्टिगेशन करी ओके से कमिटी जहा चार्जेस बनेला ताकू छोड़ा जीवो कोठी की जहां को रिमूव करिया पे इम्पीचमेंट करिया पे प्रोसेस चले से जज पाख को पठा जी सो दैट से तांकर डिफेंस रे जहा कहि करी ए सब तांको भीतर सब चर्चा चली सरला परे ये चार्जेस रो रिपोर्ट देले से निजरो डिफेंस देले सब सरी गला आपरे माने कोन तीन जणा कमिटी वाला मिसी की फाइनल रिपोर्ट दे देले स्पीकर किबा चेयरमैन यदि राज्यसभा आडो इनिशिएट हेतिले चेयरमैन को देबे लोकसभा आडो इनिशिएट हेतिले स्पीकर को देबे ओके
माने जदि केतेबेले एटा लोकसभा राज्यसभा को देवे जेतेले कमिटी भी हाँ चिंता कला जे एटा ठीक तांको अगेंस्ट जहाँ भी माने प्रॉब्लम्स आसी से इश्यूज गुड़ा आसी ठीक अच्छे दे आर करेक्ट देन से तापरे लेजिस्लेटिव वे रे जीवो ओके जो भी हाउस ताकू माने स्टार्ट करिथिला मोशन को हेटी कोन हबो स्पेशल मेजॉरिटी चलिबो ओके मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस किंबा 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग जोटा हम को ओके बोथ हाउसेस रे सेम जिनस हो स्पेशल मेजॉरिटी ओके देन थेटा प्रेसिडेंट पाखो को पहुंचियो ओके प्रेसिडेंट जदी साइन कर देला देन जज इज रिमूव आर्टिकल 124(4) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी छु ना with reference to article 143 of Indian constitution consider president can refer any question of law or fact of public importance to the supreme court for its advisory opinion. Supreme Court is constitutionally bound to respond to every reference made under article 143. The advisory opinion given by Supreme Court under article 143 is not legally valid. एटा हेमती हेमती हे जीवो प्रेसिडेंट रे पढि छु एटा आ सुप्रीम कोर्ट रो एडवाइजरी जुरिडिक्शन रे पढा अछि ओके प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट जदी पढि छु एटा आराम से हे जीवो फर्स्ट टा को ठीक अछि ना नहीं President can refer any question of law or fact public importance to the Supreme Court for its advisory jurisdiction correct अछि ओके सुप्रीम कोर्ट तापरे बाध्य से रेस्पोंड देवा पाई रेफरेंस देवा पाई किंतु जो रेफरेंस मिलिला तांको ओके जो रेफरेंस टा मिलला ताकू मानिबा पाई राष्ट्रपति बाध्य न बा ताकू लागू करियो तो गुड आंसर एटा कोडू के रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट sought the Supreme Court's advisory opinion under Article 143 whether president and governors need to follow timelines to decide the state bills. ओके एबे जो रिसेंटली गुडा चर्चा हेतिला ना एमके स्टालिन वर्सेस सेठिकर तमिलनाडु रो जो सॉरी तमिलनाडु गवर्नमेंट वर्सेस द तमिलनाडु गवर्नर केस फेस गुडा चलीथिला जे गवर्नर निज पाखरे बहुत दिन जाय कोन बिल्स गुडा को रखि दोचंदी डिस्कस करथिले ना रिसेंटली ओके तो सेइतरे द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट कोन करथिले सुप्रीम कोर्ट को पचारिथिले जे प्रेसिडेंट गवर्नर मानन को तुमे जो एबे निर्दिष्ट टाइमलाइन देलो 3 मास कि मास कि 2 मास जहा टाइमलाइन देलो सेही भितरे हमें डिसाइड करिवु कि हमरा एसेंट देबु कि तारी भितर ओके सब ठीक अछि ना डी ऑल आर करेक्ट President can refer any question or law that this court may choose any answer or decline. ये पढ़ी दिए पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट 143 1 टा होची प्रेसिडेंट कैन रेफर एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट दैट इज पब्लिक इंपोर्टेंस टू सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइजरी ओपिनियन द कोर्ट मे चूज टू आंसर और डिक्लाइन ओके ओपिनियन इज नॉट बाइंडिंग बट हाईली रेस्पेक्टेड बाइंडिंग नो ओके किंतु जेहेतु राष्ट्रपति पचारि छंती तो respected similar power to make reference was granted to federal court of india to exception eta naman rakhle chale article 145(3) requires any such reference to be heard by 5 judges eta टिके मन रख ओके यदि राष्ट्रपति रेफरेंस दे छंती ताले 5 जणर गोटे बेंच बा 5 जजेस ताको सुनी तापरे से माने निजर ओपिनियन देबे काहाकू प्रेसिडेंट को मेजॉरिटी 3 to मेजॉरिटी सहित
जदि 5 जन अच्छे 7 जन थे 4-3 मेजोरिटी सहित ओपिनियन देवे ओके प्रेसिडेंट कैन रेफर एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ फैक्ट एटा करेक्ट अछि not is not constitutionally bound okay the advisory opinion given by supreme court under 143 is not legally binding एटा करेक्ट अछि 13 हबो सी with reference to Supreme Court's judgment in K. Veeraswamy versus Union of India, 1991, judgment declared that judges of High Court and Supreme Court are not considered public servant under the Prevention of Corruption Act 1988. माने माने सुप्रीम कोर्ट रा केस रा जजमेंट अनुसार सुप्रीम कोर्ट कहितिला जे कोन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रा जजेस माने पब्लिक सर्वेंट धरा जिवे नहीं अंडर दिस एक्ट. It mandated that prior consultation with Chief Justice of India is necessary before registration of FIR against judge of Supreme Court or High Court. High Court Supreme Court or judge against जदि FIR दौच ता पूर्वरु Chief Justice of India सहित तुमे कथा हेतिबा कथा. In case of Chief Justice of India is subject of the complaint, the President must consult the Prime Minister before proceeding. One is not correct. The K. Veeraswamy judgment actually held that judges of the High Court and Supreme Court are public servants. Okay. Semane भी से Prevention of Corruption Act 1988 आधार रे जीवे. Okay. This was significant clarification bringing judges within the ambit of the anti-corruption legislation. Okay. Anti-corruption law under रे judges माने भी रहिबे. One टा not correct अछि, two is correct. Co respect of K. Veeraswamy's judgment to protect the independence of judiciary and prevent frivolous complaints. Supreme Court laid down a procedure that no FIR file माने जे चाहिबो से तापरे जज मानक अगेंस्ट रे कोन केस करबा आरंभ कर दबो ना कहबा आरंभ कर दबो FIR देबा आरंभ कर दबो सेति पे गोटे माने सुप्रीम कोर्ट कहला जे कोन ठीक अछि आमे तो माने अन्य पब्लिक सर्वेंट्स बोले आमे मध्ये एंटी करप्शन एक्ट अंडर रे जीवो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 अंडर रे जीवो किंतु जदि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रो जज अगेंस्ट कोनोसी करप्शन एफआईआर तुम देबा को चाहछो ताहेले प्रथमे कोन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित कंसल्ट करिया को पड़े. ओके स्टेटमेंट 3 टा जोटा देथिला सेटा नॉट करेक्ट. जजमेंट डिडंट स्टेट दिस कोटा जे स्टेटमेंट 3 रे जोटा हमर कहितिला इन केस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज सब्जेक्ट टू कंप्लेंट प्रेसिडेंट मस्ट कंसल्ट प्राइम मिनिस्टर बिफोर प्रोसीडिंग. यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना रे यदि कंप्लेंट अछि सेटा ए जजमेंट रे कुहा जाय नथिला. It stipulated that the Chief Justice of India himself is subject to of the complaint, then President of India would be the authority to consider the complaint. जदि अन्य जजेस मानक ना रे अछि ताहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कथा बुझिबे. जदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ना रे अछि ताहले प्रेसिडेंट माने हाईएस्ट अथॉरिटी रहिबे टू कंसीडर दैट कंप्लेंट. ओके से तापर सीनियर मोस्ट जजेस मानन को जोगाड़ करी कि सुप्रीम कोर्ट रो कथा वार्ता है. ओके एथरे से प्राइम मिनिस्टर कर ना कोठी भी मेंशन करि न. तीनटा रॉन्ग अछि एटा जो नोट देथिला सेटा भूल अछि टूटा करेक्ट अछि. आउट क्वेश्चन अछि सही उत्तर
ସେଇ ଜିନିଷଟା କହିଦିଅ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ଏଇଟା ସେଇ क्वेश्चनଟା ଏଇଟା ତ ପଢିଲେ ନା ଏବେ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ ହାଇକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିम कोर्ट जजेस अंडर एंटी करप्शन लॉज एटा भी माने न्यूज रे थिला वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ से माने चर्चा रे आसी थिले ओके माने से कहिथिले जे निर्दिष्ट केस रो जो जजमेंट हेतिला ताकू रिव्यू कर रिविजिट कर ओके एटा जो डिस्कस कले कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल विषय भाविबा चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज विथ ए legislature are permanent members of governing council. Primary function of the governing council is to act as the policy think tank for government of India. Prime Minister of India serves as the chairperson of Niti Aayog, but not necessarily the governing council. नीति आयोग जो मेन हेड बॉडी टा अछि गवर्निंग काउंसिल तारी ऊपर से क्वेश्चन पचारि स्टेटमेंट 1 चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट यूनियन टेरिटरीज विथ द लेजिस्लेचर नीति आयोग विषय आ कहबार दरकार नै से प्लानिंग कमिशन 2014-15 छडा जको जानिछो तो डायरेक्ट आंसर को चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट यूनियन टेरिटरीज विथ देयर लेजिस्लेचर आर परमानेंट मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ओके ସେମାନେ परमानेंट मेंबर्स इंक्लूड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूटी जो मानकर अछंती दिल्ली पुडुचेरी जेमती आ बाकी जो मानकर लेफ्टिनेंट गवर्नर किंबा एडमिनिस्ट्रेटर जो माने अछंती से माने सब रही ओके टूटा जोटा दिथिला व्हाइल नीति आयोग एज एन ऑर्गेनाइजेशन एक्ट एज द पॉलिसी थिंक टैंक प्राइमरी फंक्शन ऑफ गवर्निंग काउंसिल इज टू डिस्कस नेशनल डेवलपमेंट इश्यूज ओके अलाइन स्टेट विजन विथ नेशनल गोल्स माने देशर डेवलपमेंट विषय चिंता करवा आउ से स्टेट मान को अलाइन करवा मिली मिसिक जमते डेवलप प्रमोट कोऑर्डिनेशन अमंग द इंटरस्टेट माने स्टेट स्टेट भीतर कोऑर्डिनेशन बढ़िबो ओके देशर विभिन्न सेक्टर मान भीतर कोऑर्डिनेशन करवा हला पॉलिसी बनैबा ए सब माने नीति आयोग रो मेन थिंक टैंक टा ये स्टेटमेंट 3 टा नॉट करेक्ट प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन बोथ नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल एंड नीति आयोग ओके तीनटा कोन नॉट करेक्ट देछि करेक्ट अछि कोन देछि देखो हां नॉट नेसेसरी फॉल्स प्राइम मिनिस्टर प्राइमरी फंक्शन ऑफ गवर्निंग काउंसिल इज टू एक्ट एज द पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो एटा नीति आयोग ओके 1 only one sixth schedule applies to the tribal areas in which of the following states अगुआ हम जल्दी को आंसर फटाफट जल्दी बोलो सिक्स शेड्यूल एबे सिक्स शेड्यूल टा न्यूज रे अछि ना टिके पढिथिबो भल से एटा लद्दाख ओके लद्दाख वाला डिमांड करूचंती से सोनम वांगचुक को पुणी कोन जेल पे ले जाई छी बहुत चर्चा रे अछि बहुत दिन रहलानी एबे सिना जेल है आगरू चर्चा रे अछि ओके आसाम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा ए डबल एम टी यूनियन गवर्नमेंट एटा हमें पढी छु ओके फिर भी आ थोड़े थोड़े देखि देबो एटा क्वेश्चन उटा आसीबा प्राय फिक्स न्यू पॉलिसी फॉर Ladakh under which citizens who have had continuous 15-year stay in the region beginning 2019 will be considered domiciles okay माने यूनियन गवर्नमेंट एबे कोन लद्दाख रे गोटे नुवा पॉलिसी लगे पे चिंता करूछ जोदरे कोन सिटीजन्स हु हैव हैड ए कंटीन्यूअस 50 अंडर स्टे इन द रीजन लद्दाख रे जो माने 15 वर्ष लाने कंटीन्यूअस रहउछन 2019 रु स्टार्ट करिकि 15 वर्ष जो मन रहे से मन को कोन तांकर डोमिसाइल्स दे दिया सेठिकार सिटीजन हे दिवे से लद्दाख
ओके जमती आमर डोमिसाइल होची कोन आमे सिटीजन ऑफ इंडिया में सबडे बुलुछ किंतु आमे कोठी कर डोमिसाइल आमर कोठी ओडिसा रा ओके Sixth schedule was adopted under Article 244 of the Constitution with provisions for formation of autonomous administrative division, autonomous district council, etc. पढ़ी ओके 244 आर्टिकल को मन रखियो पूराटा मन रखियो प्रोविजंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स सिक्स शेड्यूल इज एप्लीकेबल टू व्हाट आर ऑफिशियली कॉल्ड एज ट्राइबल एरियाज ऑफ द स्टेट ऑफ आसाम मेघालय इन दिस शेड्यूल एरियाज गुडा का फिफ्थ शेड्यूल को किंतु स्पेसिफिक जो माने कोन निर्दिष्ट स्पेशल स्टेटस रे अछंती जो माने ट्राइबल एरियाज भाबरे आसाम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम तांको बेटा अछि ओके there are 10 such tribal areas at present in these four states ओके चारटा स्टेट रे केतेटा एटा भी हमें पढिछु पॉलिटी सेक्शन रे पढाई छी ओके 10टा ट्राइबल एरियाज चिन्हट कराई चारटा स्टेट ओके आइठी कोन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स गुडा का फॉर्मेशन है जो मानन को कोन से ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मानन को लेजिस्लेटिव पावर दिया है जुडिशियल पावर भी दिया है किसी किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनोमी मध्य दिया है अब जहाँ को मॉनिटर करूछंती निजे से स्टेट रो गवर्नर मान अकॉर्डिंग टू द सिक्स्थ शेड्यूल एडीसीज बाय ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडमिनिस्ट्रिंग ए रीजन विद इन स्टेट हैव 30 मेंबर पूरा भल से मन रखियो एडा का बहुत इंपोर्टेंट है ओके विथ ए टर्म ऑफ 5 इयर्स 30 नंबर रे बोडोलैंड जेमती टेरिटोरियल काउंसिल ता अछि आसाम रो फॉर एग्जांपल ओके सेटा उडा एक्सेप्शन रहउती काहे कि ना सेतरे केतेटा मेंबर अछंती 40 टा मेंबर अछि एई चारटा स्टेट रे 10 टा एमिति ट्राइबल एरियाज अछि जोटी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रो फॉर्मेशन करा दिबो सेमान को निर्दिष्ट भाव में अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नर लेजिस्लेटिव जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिया जाउची ओके सबु काउंसिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 10टा जाक अछि समस्त को 5 वर्षिया टर्म सहित 30 जन मेंबर रहइबा कथा केवल गोटी अछि बोडोलैंड जो टेरिटोरीटा सेतरे आसाम रो 40 टा मेंबर रहउछंती ओके आ से 39 इशू सेटा दरकार नै ADCs can make laws, rules, regulations with regard to land, forest, water, agriculture, village council, health, sanitation, ये सब भीतर पॉलिसी बनाई परिबी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मैरिज डाइवोर्स सोशल कस्टम जहाँ अछि तांकर ट्राइबल मान ट्राइबल एरियास ओके देखो एटा गुड मन रखियो आर मेंबर्स टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड मैक्सिमम सेंटेंस इज लेस देन 5 इयर्स इन प्रिजन ओके माने माने जो कोर्ट्स गुडा का बनेबे लोकल कोर्ट्स गुडा का से माने जण को कोन 5 वर्ष रु कम जाए जेल मध्य आदेश दे पाई एटा डी भल से पढ़ी दब with reference to insider trading economics consider following statement it refers to trading in securities using publicly available price sensitive information. It is regulated and prohibited in India by Security Exchange Board of India (SEBI). Insider trading includes both trading based on confidential information, sharing such information with others. Insider trading तो मैं देखी थी वो जो 1992 स्कैम मूवी जो थी हर्षद मेहता तिरे से माने भीतर भीतर लोकों को हाथ करके इनसाइडर ट्रेडिंग करती ओके को रेट आगो को बढ़िबार अछि कोन होबार अछि प्रोडक्शन कमिबार अछि से सब इंफॉर्मेशन गैदर करन SEBI has accused Pranab Adani of insider trading by allegedly sharing price sensitive information about Adani's Green's 2021 SB Energy acquisition with his brother-in-law. माने कंपनीटा किछि नुआ माने एनर्जी एक्सेट्रा ऊपर किछि नुआ करबा को जाउछि तो से आगरो कोन प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन गुडा को शेयर कर दैछन्ती मार्केट ओके जहाँ फल कौन हम एटा भी तांकर गोटे माने बिजनेसमैन मानकर सेटा भी गोटे आगरो प्राइस एक्सेट्रा ऊपर टिके माने जदि आमे कथाटा स्प्रेड कर देथिबा ताहले हमर शेयर गुडा को बहुत हेवी रेट रे बिक्री हो क्विकली बिक्री हो ए टाइप रो दिस ओके इलीगल प्रैक्टिस ता से भी को कोन इलीगल बोली करू ओके
माने एटा अनपब्लिश्ड प्राइसेस गुड़ा जोटा कि भितर भितर डाटा गुड़ा एम्प्लॉइज मानक भितर कि डायरेक्टर्स मानक भितर एसोसिएट्स मानक भितर एक्चुअली एटा करा जिबा कथा न हो एगो टिप बोली कुआ इंफॉर्मेशन टिपिंग एटा पूरा देखै छी ये मूवी रे 1992 स्कैम मूवी टिपिंग टा trading in securities using publicly available price sensitive information correct अछि regulated prohibited एटा correct अछि सेबी द्वारा एटा prohibit हेछि includes both trading based on confidential info sharing such information with others सब correct अछि with reference to foreign portfolio investment कोटा ठीक अछि FPI consists of securities other financial assets held by investors in another country. It doesn't provide the investor with direct ownership of a company's asset. पढ़ी जो इकोनॉमिक्स रे क्लास रे पढ़ाई फंडामेंटल क्लास रे एफपीआई वर्सेस एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर्सेस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ओके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर्सेस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पढ़ी छु एफपीआई वर्सेस एफडीआई ओके जो थरा मैं कहि छु कोन गोटे जस्ट ओवरऑल कहि देबा डिस्कस कर देबा एफडीआई टा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गुड़ा ओके लॉन्ग टर्म माने कोन वर्ष वर्ष बहुत वर्ष जाटा इन्वेस्ट करा जिवो लॉन्ग टर्म माने गोटे कंपनी जदी पैसा लगुची लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करूची ओके एफपीआई टा नॉर्मली कोन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को देखा है गोटे कंपनी आ गोटे देश रो गोटे जगह रे कोन आ गोटे कंपनी रे इन्वेस्ट करूची किछि समय का ओके तो आ गोटे मेजर ये होची कोन एफडीआई रे फिजिकल एसेट्स ऊपर इन्वेस्टमेंट ओके आउ एफपीआई रे कोन हुए फाइनेंशियल एसेट्स ऊपर इन्वेस्टमेंट ओके माने एफडीआई टा नॉर्मली कोन करा जाय प्रो माने गोटे कंपनी रो प्रोडक्टिविटी बढ़ाइबा पई किबा तार मैनेजमेंट को मैनेजमेंट कंट्रोल टा जेमती मन करो एफडीआई रे कोन होची बाहर यूएसए रे गोटे कंपनी आसी कोन कला बहुत गुडा इन्वेस्ट कला गोटे कंपनी भारत आ धीरे धीरे से कोन निज हाथ को मैनेजमेंट टा नै गला माने से मालिक होई गला बिकॉज से बेसी इन्वेस्ट करिछ ओके माने एठी मैनेजमेंट चेंज भी हेई पारे ओके बा मालिकाना भी चेंज हेई पारे किंतु एफपीआई रे कोन हुए सेमती हुए नै एते खाली कोन माने पैसा टा इनफ्लो कर बाहरु भीतर माने सेठी थाई कि गोटे कंपनी कोन करियो अन्य गोटे कंपनी रो अन्य गोटे कंपनी रो पैसा लगायो सेठी कर ओके शेयर एफपीआई टा करेक्ट अछि फर्स्ट doesn't provide investor with direct ownership of the company both correct अछि I think both correct अछि both correct अछि chairperson of the committee formed in 2024 to recommend framework for repairability index in India रिपेरेबिलिटी इंडेक्स रो फ्रेमवर्क ऊपर रेकमेंड करियो पई 2024 रे गोटे कमिटी हेतुना से कमिटी रो हेड के रिपेरेबिलिटी इंडेक्स okay committee constituted for the framework of repairability index in mobile and electronic sector 2024 रे एटा फॉर्मेशन हेतिला मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पे एटा फॉर्मेशन हेतिला ओके जोटा कि निजर रिपोर्ट देछि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को निजर रिपोर्ट देछि इंडिया रैंक्स एज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ग्लोबल
माने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोडक्शन वेस्ट माने बुझो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो वेस्ट बाहर से थर्ड लार्जेस्ट चाइना और यूएसए सब बेसी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बाहर करछंती थर्ड होची इंडिया ओके तार कारण होची कोन प्रोडक्शन भी बढ़ुची और कंजम्पशन भी बढ़ुची इलेक्ट्रॉनिक कंजम्पशन ओके कंजम्पशन बढ़ुची किंतु हम भारत रे कोन रिपेयर ऑप्शन कम अछि जेमति फॉर एग्जांपल मोस्ट माने करंट एग्जांपल ओला और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी गुड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स गुड़ा को बड़ बड़ सहर पर इट इज सुटेबल बिकॉज सेठी तांकर कोन निर्दिष्ट कोन कहते ताकू सर्विस प्रोवाइडर्स माने अछि जो माने रिपेयर करि परिबे एटसेट्रा करि किंतु छोटा छोटा सहर मानक पय एबे भी एटा कोन रिपेयर बोली किछि न एठी खाली दुकान खोली दैछि ओके तो माने सेति पय कोन हुए कंजम्पशन बेसी होची इलेक्ट्रॉनिक्स गुड़ा किंतु रिपेयर ऑप्शन कम अछि तो जोटा गला गला वेस्ट बेसी बढ़िबो रीयूज हे करू ना जस्ट ओलार एग्जांपल देली सेमती मोबाइल फोन्स टैबलेट्स बहुत किछि अछि तुम भाबुना गोटे मोबाइल तुम किणुच स्मार्टफोन गोटे 15-20 हजार टंका देकी मिनिमम केते दिन जाउछि एवरेज 3 वर्ष एवरेज बहुत भल यूज कल जदि तुम 3 वर्ष जी हाले 1.5-2 वर्ष रे पुनी चेंज कर धीरे धीरे सेटा फोपड़ा जाउछि गला ओके September 2024 DOCA established a committee under chairmanship of Bharat Kheda okay repairability index reference to free trade agreements involve complete elimination of all tariffs on trade between member countries जो कंट्रीज मानक भितरे ए जो एग्रीमेंट्स गुडा हुए से माने परस्पर रो टैरिफ्स टैक्सेस ओके से गुडा को समान हटै दियंतु टैरिफ्स माने कोन गोटे देश रो गोटे देश को जिंसटा जाउची तो से देश कोन लगुची टैरिफ लगुची जेमति यूएसए 50% 100% 200% कोइ दोची कैन कवर ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज एफटीएस जो एग्रीमेंट गुडा को गुड्स और सर्विस बोथ रे हे कर both are correct इंडिया यूनाइटेड किंगडम एबे लैंडमार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करथिले किछि ओके माने दिन पूर्व एफटीएस आर अरेंजमेंट्स बिटवीन टू और मोर कंट्रीज ट्रेडिंग ब्लॉक्स okay that primarily agree to reduce the eliminate custom tariff okay non tariff barriers on substantial trade between them okay both goods services रे एटा हे करी एटा कोन देथिले ओ ऑल टैरिफ्स देथिला सेटा भूल अछि एफटीएस इन्वॉल्व कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ माने जेति की एक्चुअली तांका भीतर एग्रीमेंट सेथिबो जेति की निकु नै की सेति की टैरिफ्स ही हबो ओके जीरो टैरिफ हे पारे न भी हे पारे ओके माने करो 25% टैरिफ न लिया जाउतला यूके आडो इंडिया तर जोटा जिंस उडा जाउतला ओके ताकू से मझरे कोन 50% कर देथिला तो ताकू से कम करला पुणी 30% करला ओके ऑल टैरिफ्स हटेबो बोले किछि माने नै with reference to coal sector of India is the largest coal producing country globally major coal fields in India are located in eastern states of Jharkhand Odisha West Bengal last ta correct अछि 2 number ta correct अछि 2 number ta correct अछि largest coal producing country की भारत एटा मते को डिस्कस हेछि गोटे 2 दिन पूर्व चाइना गोटे दिन पूर्व करथिले चाइना इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री ओके टू ओनली इंडिया टा सेकंड लार्जेस्ट अंडर कंपटीशन एक्ट 2002 प्रेडेटरी प्राइसिंग माने कोन प्रेडेटर माने कोन
शिकार करिया ओके शिकारी प्राइसिंग setting product prices based on international benchmarks to encourage export ओके एक्सपोर्ट को बढ़ावा पे इंटरनेशनली जो अनुसार प्राइसेस रखा जाଉଛି से अनुसार प्राइसेस रखिबा निजर प्रोडक्शन चार्जिंग एक्सेसिवली हाई प्राइसेस टू एक्सप्लॉइट कंज्यूमर्स selling goods and services below the cost of production to eliminate competitors ओके माने निजर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जति कि अछि ताठू भी कम प्राइस रे तुम बिकुछ तो तुमरो कंपटीटर्स माने सेति की प्राइस रे बिकी करू नांती से मन को के किनिबेनी तांकर कंपटीशन हटिबो ऑफरिंग फ्री प्रोडक्ट्स फॉर ए लिमिटेड टाइम एज द मार्केटिंग स्ट्रेटजी कंज्यूमर स्वीकार करूछ तुमे ऑपरेटर प्राइसिंग रो अर्थ सेवा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज नोटिफाइड डिटरमिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रेगुलेशन 2025 गोटे रूल बा फ्रेमवर्क छाड़ी आगुरु 2009 रे गोटे गाइडलाइन थिला एबे सेटा को चेंज करी कि डिटरमिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रेगुलेशन 2025 छाड़ी छि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कोन ये भारत रे जो कॉम्पिटिटिव मार्केट अछि ओके ताकू फेयर प्रैक्टिसेस जेमति हो ता ऊपर मॉनिटर कर ओके मोनोपोली हवा को देबा पे चेस्ट माने दिए नै खाली ना को दिस रेगुलेटरी शिफ्ट aims to empower the watchdog to better watchdog की competition commission of india टा watchdog to better scrutinize predatory pricing माने कोन कंपटीशन एक्ट 2002 अनुसार predatory pricing कहा को कहता सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज गुड्स बिको कि सर्विसेज बिको ओके जोटा ही कोन प्रोडक्शन प्राइस रो भी कम प्राइस रे तुमे बिकुछ सो दैट तुम्हारा कंपटीटर्स माने बाहर जोटा ऑनलाइन मार्केट रे भी देखा जाछ बेस्ट सुटेड फॉर कार्डामम कल्टीवेशन कार्डामम कल्टीवेशन पई सबुठु भला सुटेबल एनवायरनमेंट कोटा कार्डामम टा कोन कहलो गुजराती ना इलायची गुजराती इलायची एटा कोटी बेसी हो वेस्टर्न घाट रे केरला केरला तमिलनाडु कर्नाटका आंध्र प्रदेश मेनली केरला कार्डामम हिल्स अछि सेठी केरला तमिलनाडु एटा न्यूज रे काहे कि आस्थिला जो इकोनॉमिक्स पार्ट दैट एक्चुअली न्यूज़पेपर रे इकोनॉमिक्स जो पेज था सेतिर गोटे आसीतिला जे केरला रा चासी माने कार्डामम चासी माने को बहुत लॉस होछ तार कारण होचंदी स्नेल्स माने SNAILS स्नेल्स तुम नॉर्मली पोको देखिथिबो सावळ माने जो माने पत्र खान किंतु स्नेल्स माने भी पत्र खान हम घर ई साइड रे पछपटे गोटे फूल अछि कोन की फूल गोटे कोनती भूली जाउछ म ताकू ब्लू ब्लू कलर मजरे व्हाइट व्हाइट ही थाए मुह वाला देखा जाते फूल वाला फेस वाला देखा जाते से फूल को खाउजंती को माने से जो स्नेल्स माने गेंडा छोट छोट जो वर्षा दिन हे जानती बहुत गुडा मु आनिथिली फूल पूजा पय देखली चारटा ता भीतर अछन छोट छोट ओके तो से जो स्नेल्स मानक जो कोन होउची तांकर पत्र पत्र खाउ जतिबा जो कार्डामम कल्टीवेशन रो बहुत लॉस होइतिले केरला रो वेस्टर्न घाट्स रो चासी मा सेति पे न्यूज रे एटा अछि ओके कार्डामम स्पाइसेस गुडा को जोटा नॉर्मली कोन भलो वर्षा दरकार करे भलो खरा दरकार करे ट्रॉपिकल रीजन्स नॉर्मली एटा कोन पहाड़िया जगह मानन करे हुए काहे कि हम पढिछु टी कॉफी स्पाइसेस गुडा को पहाड़ रो स्लोप्स रे करा जाय सो दैट बेसी वर्षा हेले मध्ये पानीटा फ्लो करि दिबो पानी जमी के रहले गछ चेरस पचि जिवो सेति में सेटा स्लोप्स रे करा जाय ओके वन टा करेक्ट अछि टेंपरेचर रेंज बिटवीन 10 डिग्री टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड सेटा देखिबा अल्कालाइन सॉइल विथ pH 7.5 सेटा भी हमें कहि परिबनी पार्शियल शेड एट कॉफी रे जहा एथरे भी सा चाटा ओपन रे करा दे कॉफी टा कोन शेड रे करा दे ओके माने पहाड़ रो सी स्लोप रे करा जोटी बेसी सूर्य किरण पड़े ना बा कम समय पे पड़े ओके हाई ह्यूमिडिटी वर्षा बेसी ह्यूमिडिटी बेसी थिबो 1-4 टा करेक्ट अछि ओके 2-3 टा एबे वाला क्वेश्चन हमें स्किप करिबाटा बेटर काहे कि कॉटन देथिले हमें कर देबार चांसेस अछि व्हीट देथिले कर देबार चांसेस अछि राइस देथिले कर देबार चांसेस अछि किंतु कार्डामम टा हठात गोटे कोन अनइजी हे जिवो क्वेश्चन
ओके 1 4 आमे बाछि भी देई परिबा किंतु 2 3 टा टिके कष्ट हो तो ए वाला क्वेश्चन एक्चुअली स्किप करिवा कथा ओके टेम्परेचर 10 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड पीएच माने कोन माटीटा एसिडिक थिबा कथा हो तो एटा भी तुम्हें जदि तुम्हें सॉइल क्लास भल से करिछो इंडियन ज्योग्राफी रो सॉइल क्लास जदि तुम्हें भल से करिछो ताहले तुम्हें एटे कोन टिके ट्रिक लगै परिबो टेम्परेचर टा तुम्हें करि परिबोनी एठी तुम्हें ट्रिक लगै परिबो जे पीएच टा 7.5 हला माने अल्कालाइन टा एटा आ तुम्हें पढ़ी दे जे कोन पहाड़ रो स्लोप मान करे जो टी स्पाइसेस कॉफी हुए सेटा फॉरेस्ट लोम सॉइल गुडा जो लिटरिंग बहुत बेसी हुए जो पत्र झड़ा एटसेट्रा जोडा को ह्यूमस फॉर्मेशन करे एसिडिक सॉइल रहे सेटा टिके मने पकई परले ए आंसर टा तुम करि परिबो जे अल्कालाइन हेबोनी एसिडिक सॉइल हेबो बिलो 7 पीएच रहइबा କଥା ता अनुसार एको माने ए जो अल्कालाइन टा को एसिडिक बोले कि जदि तुम पहाड़िया माटी टा को मने पकई करि परलो ताले हे परिबो अदरवाइज इट्स स्किप क्वेश्चन माने तुम स्पाइसेस टी कॉफी को टिके मन पकई दबो जे तार पई कोन एक्चुअली माने एनवायरमेंटल येटा को टाइप रो रहइबा କଥା जे ट्रॉपिकल रीजन्स रे हुए मेनली पहाड़ रो स्लोप्स मान करे हुए ओके वर्षा बेसी दरकार ह्यूमिडिटी हाई ह्यूमिडिटी ओके पार्शियल सेट कॉफी वाले को भी सेट दरकार आ एसिडिक सॉइल हो तो सही अनुसार तुम एटा चूज करिवो 1 2 4 लास्ट क्वेश्चन आज रो with reference to most favored nations sorry most favored nation status most favored nation टा actually कटि जाई most favored FMN most favored nation status consider the following most favored nation principle was designed to prevent countries from giving different treatment to one partner over other there is a formal procedure of suspending FMN treatment India has never suspended FMN status of any country. Most favored status. Most favored माने कौन? आमे नॉर्मली जो कंट्रीज मानक सहित कौन अछि भलो डिप्लोमेटिक रिलेशन अछि भलो ट्रेड पार्टनरशिप रो अछि सेही माने हमर मोस्ट फेवर्ड नेशंस गुडा ओके एटा उटा प्रिंसिपल टा WTO अंडर एटा जाउछ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ओके FMN principle was designed to prevent countries from giving different treatment to one partner माने कोनोसी तुमे जहा सहित ट्रेड करूछ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रहते समस्त सहित सिमिलर रिलेशनशिप मेंटेन करो काहाकू माने कोन फेवर करो नहीं सेटा को नै कि एटा प्रिंसिपल वन टा करेक्ट अछि each member treats all the other members equally okay trading partners भावर किबा diplomatically if a country improves benefits that gives one trading partner it has to give same treatment to the other जणे जदि तुमको बेनिफिट दोछि तुमे भी अन्य को सेति बेनिफिट देबा पे चेष्टा करबो WTO मेंबर्स मान WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रेटा प्रिंसिपल टा okay it seeks to replace the frictions and distortion of power based policies with guarantees the rules based framework where trading rights do not depend on the individual participant economy and politics माने कोनोसी देश जेमति कोन निजर पावर रो बहुत मिसयूज न कर जेमति यूएसए मिसयूज करिवा लोक अछि से रशिया चाइना माने बेसी पावरफुल तो माने अन्य कंट्री जेमति कोन कोनोसी लेस डेवलप्ड नेशन किबा मिडिल इनकम कंट्रीज मानक सहित जेते बेले कोन करूछंती ट्रेड करूछंती तो निजर पावर रो मिसयूज करि परिबे समान जेमति चाइना पाकिस्तान चाइना पूरा मिसयूज करूची तार पावर किंतु WTO अनुसार कोन एमितिया उटे स्टेटस रहिबा पर FMN प्रिंसिपल रहिबा पर जदे तुम जन को जेति की सपोर्ट करूची जन जेति की तुम ऊपर विश्वास करूची जेति की तुम से ट्रेड करूची तुमे ताको सेति की ट्रेड देबा कर ओके तापे एक्चुअली कोन से फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं किछि ना इट इज जस्ट अ प्रिंसिपल ओके 2019 रे जेतेले कोन हितला पहलगाम अटैक हेतले जेमति सॉरी पहलगाम कोछि कोन सेटा पुलवामा जम्मू कश्मीर 2019 रे पुलवामा हितला तो पुलवामा अटैक हला परे इंडिया पाकिस्तान भीतर जो FMN स्टेटस था इंडिया ताको कैंसिल कर दे
ओके हेड सस्पेंडेड 2019 पुलवामा अटैक पर जमती ए वर्ष इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल है 2019 रे पेमेंट स्टेटस कैंसिल करथिला पाकिस्तान फॉर्मल प्रोसीजर किछि नहीं वन देयर इज ए फॉर्मल प्रोसीजर फॉर सस्पेंडिंग ओ सॉरी ट्रीटमेंट फॉर्मल प्रोसीजर अछि किंतु बाय लॉ किछि निर्दिष्ट नहीं 1 2